Hello students, how are you? I hope that you all will fine. Today I will start the session for class 7th, okay? And in previous session I have taught you about the integers, its properties and addition or subtraction of integers. But in this session we will discuss some problem related to sum and difference of integer and exercise 1A. This exercise belongs to R.S. Agarwal book, okay? And turn your books, exercise 1A. Now get ready to solve the problems, okay? The first question of R.S. Agarwal book exercise 1A, that evaluate. It means आपको evaluate करना है, solve करना है. So how to evaluate it? As you know, and I have already discussed in previous session that 15 plus minus 8. Now we have to add minus 8 into 15. For this you will simple subtract 8 from 15, you will get 7, okay? Next, minus 7 plus minus 23. It means you have to add minus 7 with minus 23. I have already mentioned in previous session that if there is minus sign, then you will put sign minus and work as a plus. It means you will add 23 and 7, you will get 30 and signs will be a minus, right? यू कहते हैं कि मैंने प्रीवियस सेशन में ऐसा डिस्कस किया था कि अगर माइनस हो, टू नंबर्स अगर माइनस में हो तो वर्क प्लस का करेंगे बट साइन जो है माइनस कर देंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ minus 1436 minus 1000 plus 436. Sum is you have to plus it. And now calculate it. Minus plus work minus का होगा तो 1000 से 436 माइनस करेंगे. 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6 और ये 9 से 4 गया 5. बट माइनस साइन होगा बिकॉज साइन को अगर हम लोग इग्नोर करें तो देखेंगे कि 100436 में ग्रेटेस्ट नंबर 1000 है और 1000 का साइन देखेंगे क्या माइनस, तो यहाँ माइनस पुट करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, सब्ट्रैक्ट minus 134 from the sum of 38 and minus 37. It means you have to first of all add 38 with minus 37 and then the result should be subtracted from this. So first of all you have to add 38 with minus 37. You will get 38 minus 37, 1. Now you have to subtract minus 134 from 1. 1 minus 134. Okay, 134 should be subtracted from 1. And you will get minus plus 134. This becomes 135, right? Next here, third question. Third, it means न्यूमेरिकल नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 है आरएस बुक का. मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मैं बना रहा हूँ. ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना 8 नंबर क्वेश्चन है. तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल देख लोगे. इसको माइनस 13 माइनस प्लस 27, ओके, माइनस 25 माइनस प्लस 40, राइट? जिससे इसको माइनस करेंगे. इफ 13 is separated from 27 you will get 14. And if 25 is subtracted from 40, you will get 15. Now add this become 29. Okay. Next question number 11. This is the 11 number question. It is given here that a equals to minus 8, b equals to minus 7, and c equals to 6. Verify that a minus b is not equals to b minus c. You have to verify it. For this, first of all, you have to calculate here a minus b. Then put the value of a here minus 8 and value of b here minus 7. Minus 8 minus plus 7. This becomes 15. Now calculate b minus c.
B, value of B here minus 7 and value of C here 6. This become minus 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 plus cover 13. See here, B minus C is equals to minus 13 and A minus B is equals to 15. Obviously this is not equal to this, okay? Then write here, hence A minus B is not equals to B minus C. Verified, okay? ऐसे क्वेश्चन वेरीफाई करोगे. आई होप दैट इस तरह क्वेश्चंस बना लोगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर 13 नंबर क्वेश्चन, ओके? Turn your page. Read question number 13, dear students. In question number 13, it is given that the sum of two integers is 65 if one of them is minus 37, find the other. In this question, it is said that sum of two integers is 65. One is minus 37, find the other. Then you have to assume here other number. Let the other number, it means other integers, be x according to question. First integer is 37 here and second integer is x here. Sum of both integer is equals to 65 according to question. S equals to 65, this should be shown in right side. This become plus 37. This implies x equals to 7, 5, 12 carry 1, 6, 3, 9, 1, 10. Then hence the other integer is 102. इस तरह से आप अदर इंटीजर निकाल सकते हैं. ऐसे 2-3 टाइप मिलेंगे क्वेश्चन आपको बुक में, आप बनाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके? नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया है सब्ट्रैक्शन वाला. आई वुड लाइक टू डिस्कस इट अगेन इन क्वेश्चन नंबर 4. Turn your page and see question number 4. I have not discussed 4 and go ahead. 4 number question. एक्सरसाइज वही है, 1 है, क्लास 7 है, आगे सवाल बुक का है. सब्ट्रैक्ट 4 का फर्स्ट में बताता हूं. 28 from minus 42. How will you solve it? It means you have to subtract 28 from minus 42. Then first of all you have to write here 42 and then minus 28. You will get minus minus minus, but work should be plus. 8 to 10 carry 1, 4 to 6 or 1, 7, right? 1 ये minus 70 आंसर होगा इसका. 4 का मैं बताता हूँ अगेन. 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे. minus 66 from minus 34. क्वेश्चन ये कहा है कि माइनस 66 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 34 से. तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 34 लिखोगे, किसी से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन दोगे. अब फिर लिखोगे माइनस 66. एज यू नो माइनस माइनस प्लस, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, इन दिस क्लासेस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ plus minus, it means numbers, okay? 66. If you will subtract 34 from 66, you will get 32. That's all, okay? I am going to end this session. You all are requested to me that do exercise 1A. We will see you again in next classes with exercise 1B, okay? Thank you for watching.